Hello everyone, we welcome you all once again to the Sandy Lake Cricket Grounds in Dallas, where we have Dallas Knights taking on the TCA team. Knights have been outstanding in this tournament. They have won their first two league matches, and they also defeated the defending champions, chasing 219 in the second match, with Moshin scoring a brilliant century. So many centuries have been scored in this tournament so far. Last year we had only 2 centuries being scored, and we have seen some huge scoring matches as well. This is one of the finest grounds for batting mainly. Dallas Knights defeated JPC Thunders in their first match, and then they overcame the defending champions Punjab Lions. And this is their first match in the second phase. They have some fantastic players in their squad. Sehan Jayasuriya, who was very successful. In fact, he was the leading run scorer in minor league cricket, is part of their team. So they have won the toss today and decided to bat first. So TCA has got so many youngsters, and it's been a good opportunity for them. In fact, it's been a very good platform for them to showcase their talents. Subbu, Chakrapani and Srikanth are the umpires who are officiating in this match. So it's been a wonderfully organized North Texas Cricket Association. For this championship. So Dallas Premier League 2022 has been a successful tournament so far. We've got 2 more days to go in this second phase, and then we playoffs and grand finale on October 1st. Sandy Lake is one of the finest cricket grounds in Dallas. So from the commentary box, the bowlers enjoyed a bit of breeze. Starting to see his game. Yeah, his game is good. So the first over coming up in this match. His game though. Match is going to be important for TCA. They have not won any match so far. They were thrashed by Punjab Lions. Punjab scored 243 against them at Mechani 1 cricket grounds in the first phase of the championship. The first ball coming up here. Runs here straight away. The batter playing the ball nicely on the onside towards the short mid wicket. And Dallas Knights are off the mark here with that single.
first over in Dallas. Very hot evening here. Sandy Lake Cricket Grounds is one of the smallest, but it's a beautiful place. So left-right combination. I'll also mention the names of the batters in a while. There is some technical problem. So this is the first over in Knight's innings. The bowler misses the run up here. He's bowling from the commentary box end. On the line of the leg stump, and very nicely played towards long leg for a boundary. The first boundary in Knight's innings here. This is only the first over. So it's a good batting wicket. The ball pitching on the leg stump and nicely played towards long leg for a boundary. So the fielder coming up there. So this is the first over in Knight's innings. They won the toss and decided to bat first today. Oh, pitched and driven nicely again on the offside. But magnificent effort. The fielder had to cover a lot of ground there, but he fielded it nicely in the end and almost saved 2 runs for TCA team. So runs coming easily in the first over. Already a boundary has been hit. So 7 without loss, Dallas Knights, after deciding to bat first. Still the group is wide open after Punjab Lions lost to JPC Thunders yesterday, and Spartans are placed nicely in this tournament. They have played 2 and they have won 2 matches. They defeated TCA in the first match, and then there are some cricketers from India in this tournament. Excellently played over mid wicket, and that is the first 6 of the match. And the batter picked it nicely and superbly over mid wicket. So it's been a big first over so far for Dallas Knights. A 6, a boundary, a 2 and a single. They chased 219 against Punjab Lions in their last match. So it's already been a very big over. They've got some excellent cricketers in their squad, and everyone has chipped in this tournament for them. They've played 2 matches and they've won 2 matches. It's been a very good tournament for them. Numan Anwar and Lahiru Milanta are the batters. Milanta is 12 not out, and one more 6 here from Lahiru Milanta. A very expensive over from Akhilesh Sudhakar. Is
Knights decide. Keep watching DPL YouTube channel. Noman Anwar is on strike. He's one not out. He opened his account of the very first delivery he faced from Achilles Sudhaka. What a start here for Dallas Knights after deciding to bat first on a very good batting wicket at Sandy Lake here. So second over commencing from the far end. Noman Anwar was beaten on that occasion, the ball keeping a bit low. They've got fantastic batters in their squad. Usman Bawaja, Abhiram Walisamagari, Saikant Akunuri, Ali Sheikh, who played for Punjab Lions last year, is the captain. And then Sehan Jayasuriya to come for them. Playing nicely towards extra cover, and they complete a single here. And Lahiru Milanta is on strike now. He's looking in superb touch. Already 18 not out of 5 deliveries. Hitting 1 boundary and 2 sixes. Next delivery has been played nicely on the offside by Lahiru Mihanta, and he goes to 19 with that single. Sahil Lada is the bowler, his first over. This has been a good over so far for TCA team. They lost a toss. High full toss, and he hits it nicely over square leg. But wait for the umpire signal, and umpire. So this is the third of the match. Sahil Lada bowled a high full toss, and umpire also declared it a no ball. So free hit here for Dallas Knights. 7 runs coming off that no ball. A 6 scored superbly by Numan Anwar. He's 8 not out. No chance for anyone there. Powerfully hit through mid-wicket for a boundary. So 11 runs coming off one ball here. Because of that no ball. And Anwar moves on to 12. Milanta is 19 not out. The left-right combination has been posing lots of problems here to the TCA bowlers. Sahil Lada is also in the air, but there's no fielder. He's going to get 2 runs quite comfortably. Noman Anwar is a very good player.
He's also been in Dallas Knights in this competition. This is Knights won the to bat first. They've already scored 34 without loss. And will place a nice shot and he's going to get runs. The fielder chasing. I don't think he's So 2 overs completed in Dallas Knights innings, 38 without loss. Anwar is 18 not out. Milanta is 19. Both Akhilesh Sudhakar and Sahil Lada were expensive in their first overs, conceding 19 runs each. So what a start here for Dallas Knights after they have decided to bat first here at Sandy Lake Cricket Grounds. And the weather cooling down a bit here. It's been a very hot day in Dallas. So there is a change in bowling from the commentary box end. Lahiru Milanta, the left-handed batter, will be on strike. This is the third over. Milanta is 19. Short delivery just outside the line of the off stump. Pandya appeals for a catch and umpire gives him out. And Milanta is out for 19 here. And TCA strike here. They have been able to dismiss Milanta. So they are 38 for 1 now. So Ashish strikes for TCA, getting dangerous. Not out, he's at the non-striking end, and it's been a good over so far from Ashish.
What a shot that was from Jayasurya to get off the mark on the line of the leg stump, and is very strong on the onside. And he opens his account with that boundary. No chance for anyone to stop it. This is the third over in Dallas Knights innings. They won the toss and decided to bat first. But they've also lost the wicket of Milanta in this over. Ajinkya, the wicketkeeper, took the catch. Next delivery over pitched outside the line of the off stump, and Jayasurya driving it to sweeper covers. He gets one run. And the score moves on to 43. They're only in the third over. So 3 more overs to go in power play after this. And it's been dominated by the Dallas Knights batters so far. Ashish is the bowler. Anwar will be on strike. Anwar is a right-handed. Subbu Chakrapani and Srikanth are the umpires who are officiating in this match. Oh, pitched. Good effort by the fielder, but no chance for him. And one more boundary. So there is a fielder, sorry. He stopped it nicely just inside the boundary line there. But they cross for a single here. Anwar is also looking a bit dangerous here. He's 19 not out with that single. That brings Jayasurya back on strike. He's 5 not out. Well played, but there is a fielder. He wanted to chip it over mid-wicket, but hitting the ball straight to the fielder. So end of a good over from Ashish, in which they got the wicket of Milanta. It was of course an eventful over. Some runs. So after 3 overs, deciding to bat first, Dallas Knights are 44 without loss. So 4th over commencing from the far end, 44 without loss, Dallas Knights. Numan Anwar is on strike, he's 19 not out. Jayasurya is batting on 5. The batter who's been dismissed is Lahiru Milanta for 19. So Ashish Das got the wicket of Milanta. That was his first over. So this is the 4th over in Dallas Knights innings. So it's been a good start for them so far. Next delivery has been played nicely, but no chance of any runs here to Anwar. So Ali Sheikh is the captain. He played for Punjab Lions last year. He's won the toss and had no hesitation in deciding to bat first. It's a good batting track. Good delivery from Aurav Ashok. He's replaced Sahil Ladha from the other end. And so far 2 dot deliveries in this over. Good over so far for TCA. They contain the batters in this over. Next one shot
And a slight misfield that gives the batters an opportunity. So Jayasuriya is back on strike here. The left-handed batter. He's a very fine player. The most successful player in the minor league cricket tournament this year. He was in fact the top scorer. And he shifted to America in 2019, 18-19. And he's been very popular here in all tournaments. And Srikanth and Subbu Chakrapani is from Tamil Nadu in India, but they have been living in the US for quite some time. Fourth over in Dallas Knights innings, 45 for 1 wicket. The wicket of Milanta, an important wicket. Short one, good effort, but he fails to stop it. So it's a boundary here for Jayasuriya. Second boundary. दास तैयार हो रहे हैं. उनका दूसरा ओवर है और पहले ही ओवर में उनको मिलांता का विकेट मिला था और गेंद को मैदान के ऊपर से खेल दिया 4 रन के लिए. फर्स्ट बाउंस के बाद, टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन पार करें और इस प्रकार से एक और चौका यहाँ पे अनवर के बैट से निकलता हुआ और 50 रन पूरे हो चुके हैं. 53 रन 1 विकेट खोकर. ये दूसरा ओवर है आशीष दास का. पहले ओवर में केवल 6 रन दिए थे और उनको मिलांता का विकेट भी मिल चुका था और स्ट्राइक पर अनवर. Dallas गेंद को
Last over coming up in power play. And what a start here for Dallas Knights after they decided to bat first here. Jayasuriya is on strike. On the line of the leg stump and played nicely through mid-wicket for a boundary. As I've been mentioning, he's a very strong player on the onside. Jayasuriya is a very common name in Sri Lanka, very popular name as well. And Sehan Jayasuriya, the man in form in this year, he's scored runs in all tournaments he has played. He was the top scorer in minor league cricket tournament. And today he's got a good opportunity to make a big score. He's hit 3 boundaries so far, 14 not out of just 8 deliveries. Arav Ashok bowling in his second over. He bowled a good tight over, giving away only 5 runs. So 4 bowlers have been used by the TCA captain so far. Ali Sheikh, the Dallas Knights captain, won the toss and decided to bat first. Ashok bowling from the far end. The wicketkeeper standing very close to the stumps. Nicely played. A delicate shot here and it's going to be a boundary. So back-to-back boundaries here for Sehan Jayasuriya. One on the onside, one on the offside. He's a very dangerous player. And when he gets going, it's very difficult to stop him. He moves on to 18 with that boundary. His 4th boundary. So this is the last over in power play. Again, delicately played in the same direction. This time slightly to the left side of the fielder there. And he gets one more boundary. What a start it's been for Dallas Knights today. Runs coming easily, 75. And 3 more balls to go in power play. And 3 boundaries have been hit of the first 3 deliveries from Arav Ashok. Straying in length. And one more fielder has been brought on the offside. Covers square point and backward point. This time he hits it to the sweeper covers and he gets 1 run. So Sehan Jayasuriya is 23 not out of 11 deliveries he's faced. And he's hit 5 glorious boundaries in his innings so far. Anwar, who is also looking pretty dangerous today, is 33 not out. He's on strike to Ashok. 2 more balls left in power play. So already 76 on the board. Well bowled by Ashok just outside the line of the off stump. And the batter leaving the ball into the wicketkeeper hands. No stroke offered. So 1 ball left in power play. 76 without loss, Dallas Knights. Well played, is going to get 1 run. So after 6 overs, Dallas Knights deciding to bat first or 77 for the loss of 1 wicket. Keep watching DPL YouTube and DPL Facebook.
Seventh over. So this is the seventh over. The line of the off stump, and Sehan playing it towards short third man, and the bat is crossed for a single here. So this has been the best over so far for TCA. Only 5 runs coming off. So after 7 overs, 82 for the loss of 1 wicket. Keep watching DPL YouTube and DPL Facebook channels. Over. सात ओवर के बाद 82 रन, 1 विकेट खोकर आउट होने वाले बल्लेबाज लहेरू मिलांता, जिन्होंने 19 रन बनाए, लेकिन एक और श्रीलंकन खिलाड़ी सेहान जयसूर्या काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। 25 रन बनाकर नॉट आउट है। 13 गेंदों का सामना किया, 5 चौके लगाए। अब स्ट्राइक लेंगे। ये 8वां ओवर है डैलस नाइट्स के इनिंग्स में। 36 रन बनाकर नाबाद है नुमान अनवर। 23 गेंदों का सामना किया, 5 चौके और 1 छक्का लगाए। मिलांता, जो कि आउट होने वाले खिलाड़ी, 19 रन बनाए थे, 7 गेंदों का सामना किया और अब तक 5 बॉलर्स को इस्तेमाल किया कप्तान ने, टीसीए के कप्तान ने। और बॉलिंग में परिवर्तन, लेफ्ट आर्म स्पिनर को लाया गया।
दूर वाले छोर से। और मीडियम पेस बॉलर्स काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए। सुधाकर ने 19 रन दिए, केवल एक ही ओवर उन्होंने फेंका। और उसके बाद लड्डा, पहला ओवर काफ़ी टाइट था लेकिन दूसरे ओवर में 19 रन दिए थे। 15।
Yes. So this is the 8th over. Dhawan in his second has been the most economical bowler so far for TCA. Bowling from round the wickets now to Sehan Jayasurya, who is 37 not out. Good partnership has already been built for the second. Into the bushes there, and there is a slight hold up in the play.
outside the line of the off stump, and it's a wide delivery. The one bowls a good delivery on the line of the off-hand middle, and no stroke offered. There is a correction in the score. The scoreboard shows it's 105 for 1 wicket. Playing nicely on the offside, wanting a single which is not there. So end of over number 9. So after 9 overs, 106 for 1 wicket. So 9 overs completed, 106 for 1 wicket. Anwar is 45, Jayasuriya is 38. Change in bowling from the far end. Medium pacer has been brought back into the attack. The first delivery outside the line of the off stump, a Yorker length delivery. Jayasuriya offering no stroke. As the third man bound, but he's played some glorious shots today on both sides of the wicket, and he moves on to 42. So this is Sahil Ladda's second over. He's been brought back into the attack. His second spell, he conceded 19 runs in his first over. This is the 10th in Dallas innings. Playing a slog sweep shot from outside the off stump. Not an easy shot. The wicket of Lahiru Mila was out for 19.
काफ़ी नो बॉल्स टीसीए की तरफ से देखने को मिला आज, और ये मेरे ख्याल से तीसरा नो बॉल है, और उसे ऑन साइड में स्लॉग स्वीप शॉट खेला, लेकिन एक ही रन मिलेगा। क्रॉस बैटेड शॉट था, वहाँ पे मिड विकेट पर खिलाड़ी ने बहुत अच्छा फील्डिंग की। ये 10वां ओवर है डैलस नाइट्स के इनिंग्स में, और टॉस जीता डैलस नाइट्स के कप्तान अली शेख ने, और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। दोनों बल्लेबाज 50 के करीब आते हुए 46 रन बनाकर नॉट आउट है। नुवान अनवर और सिहान जयसूर्या 43 रन बनाकर खेल रहे हैं। 23 गेंदों का सामना किया, 8 चौके लगाए। अनवर ने 5 चौके और 2 छक्के लगाए अपने 46 रन्स में। 31 गेंदों का सामना किया, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 10 ओवर के बाद 114, 1 विकेट खोकर। कीप वॉचिंग DPL YouTube and DPL Facebook channels. कमेंट्री बॉक्स एंड से एक और मध्यम तेज गति के गेंदबाज 11वां ओवर शुरू कर रहे हैं टीसी के इनिंग्स में। ऑफ स्टंप के बाहर और अपील किया, और इसी के साथ ये दूसरा विकेट गिरा। जयसूर्या आउट हो गए। ऑफ साइड में उठा के मारना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले ने बाहरी किनारा लिया, और इस प्रकार से ये दूसरा विकेट गिरा डैलस नाइट्स का। 114 रन, 2 विकेट खोकर जयसूर्या आउट होकर वापस जा रहे हैं 44 रन बनाकर। 25 गेंदों का उन्होंने सामना किया, और विकेट के पीछे फिर से एक बार एक बेहतरीन कैच अजिंक्य का। इस प्रकार से ये दूसरा विकेट डैलस नाइट्स का गिर चुका है। 114 स्कोर। कीप वॉचिंग डैलस प्रीमियर लीग DPL YouTube and DPL Facebook channels. Another left-handed comes into bat here. 114 for 2 wickets. This is the 11th over in Dallas Knights innings. And Sudhakar strikes for his and one more appeal here. But this time umpire turns down the appeal. Akhilesh Sudhakar bowled an expensive first over, conceding 19 runs.
than 600 runs so far in 3 matches. In terrific form today. This is only the 11th over and already 119 runs on the board. So 9 more to go after this one. Anwar is 50 not out. Of 33 balls, 6 boundaries and 2 sixes is it. Bowling in his second over in this over. Again, a beautiful shot here from Numan Anwar. We have to wait for the umpire signal here. He hit it over point for a boundary. So back-to-back boundaries. So an eventful over here from Sudhakar. And after 11 overs, Dallas Knights are 123 for 2 wickets. बारहवां ओवर शुरू हो चुका है और फिर से जोर से स्पिनर को लाया गया। अली शेख जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर है, स्ट्राइक पर है, 1 रन बनाकर नॉट आउट है। अब तक 6 बॉलर्स का इस्तेमाल किया और शेख ने खूबसूरती से गेंद को खेला ऑफ साइड में पॉइंट की तरफ 4 रन के लिए। यह उनका ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी और खूबसूरती से खेला ऑफ साइड में। शानदार खिलाड़ी अली शेख कप्तान बने डैलस नाइट्स का। लास्ट ईयर पंजाब लायंस के लिए खेले थे। आज उन्होंने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। काफी अच्छी शुरुआत और 8 ओवर बाकी है। इसके बाद धवन को दूर वाले चोट से लाया गया। ऑफ स्टंप के बाहर फिर से एक बार ऑफ साइड में खेला और केवल देखना है कि वहां पे अंपायर अभी भी चेक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रन दिया नहीं है। स्क्वायर में बहुत अच्छा खेलते हैं अली शेख।
और ये तीसरा ओवर है धवन का। इस बार लेग स्टंप पर और धीरे से ऑन साइड में खेला स्क्वायर लेग की तरफ और 1 रन लेने का मौका मिला। ये 12वां ओवर डैलस नाइट्स के इनिंग्स में 54 रन बनाकर नॉट आउट है अनवर। अब स्ट्राइक लेंगे और फील्डिंग में परिवर्तन। और जब भी कोई लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मिडिल पे रहती है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है फील्डर्स को, बॉलर्स को। इस बार धीरे से ऑफ साइड में खेला 1 रन के लिए, दूसरा रन लेना चाहते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा मिसफील्ड और उसका फायदा उठाया दोनों ने। और पीछे हटे और गेंद को उठा दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। शानदार बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे नुमान अनवर। He's really played some glorious shots today. He's played shots all around the wicket. That was an excellent shot over mid wicket. Pitch shot and he went back quickly and hit it magnificently for a 6. That was in fact his third 6. So after 12 overs, 136 for 2 wickets. Thirteenth over getting underway, and this time straight into the hands, and the captain is out. Ali Sheikh was trying to hit it over mid-on but doesn't connect it properly, and Dallas Knights lose their third wicket here. Captain is going back to the pavilion. He is dismissed for 6 here, and Knights have lost their third wicket. The new batter who's coming is Rahman Dar. Yet another left-handed batter in Dallas Knights squad. They've got so many left-handed players. Outside the off stump, going for a shot, and he's out.
So 2 wickets in 2 balls here for Arav Ashok, and they are slumped to 136 now for 4 wickets. They've lost 2 wickets in this over. Dar is dismissed for 0. So balls 36 for 4 wickets. Absolutely beautiful. That's right. I want this team to be bowled out before. You got some good players, of course. See, in the evenings here, I saw yesterday. I observed all that. Sorry. Cameras. So 100. Arav Ashok. The new batter who's coming is Usman Raza, straight away, Usman Bajwa, sorry. Straight away of the mark, playing the ball nicely on the onside towards the square leg. So this is the 13th over. They've lost 2 wickets in 2 deliveries. Sheikh out for 6, Dar for 0. Numan Anwar, 62 not out of just 36 deliveries, 7 boundaries and 3 sixes is it. On strike to Arav Ashok. Cutting the ball straight to the fielder. No chance of any run there. And what an over this has been from Arav Ashok. He's got 2 important wickets in this one. Getting rid of Sheikh and Dar. Successive deliveries. It was a hat-trick in fact. Playing nicely to square third man. He gets 1 run. So 1 more ball remaining in the 13th over. Anwar moves on to 63. Usman Bajwa is on strike. Both the right-handed batters are out there in the middle. We saw quite a few left-handed before this. Bajwa playing it nicely. So end of a very good over from Arav Ashok, in which he got 2 wickets. So after 13 overs, Dallas Knights are 138 for 4 wickets.
14वां ओवर शुरू होने वाला है। 138 रन 4 विकेट खोकर बाजवा और अनवर बैटिंग कर रहे हैं फिलहाल। और दूर वाले छोर से फिर से लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर तैयार होते हुए। पिछला ओवर बहुत ही बढ़िया था जिसमें 2 विकेट मिले थे अशोक को। और ये 14th ओवर है डैलस नाइट्स के इनिंग्स में। अब अनवर को थोड़ा सा खुल के खेलना होगा क्योंकि काफ़ी देर से बैटिंग कर रहे हैं। आगे आए, फुल टॉस पे लिया और ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे लेकिन गेंद गई ऑफ साइड में। केवल 1 रन लेने का मौका मिला। और ये 14th ओवर, इसके बाद और 6 ओवर बाकी है। 6 विकेट हाथ में डैलस नाइट्स के। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया अली शेख ने आज। रेड्डी, अंशुल रेड्डी, दूसरा ओवर उनका। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज ओवर पिच ऑफ साइड में गेंद को ड्राइव किया और केवल 1 रन लेने का मौका मिला बल्लेबाज को। अब तक 6 बॉलर्स को इस्तेमाल किया टीसीए के कप्तान ने और सबसे सफलतम गेंदबाज रहे आरव अशोक। लेग स्टंप पर और खूबसूरती से गेंद को मिड विकेट के ऊपर से उठा दिया 6 रन के लिए। फ्लाइटेड गेंद थी रेड्डी की और उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने। मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया 6 रन के लिए। शानदार शॉट। काफी ओवर्स उनके पास है इस ओवर के बाद और ये चौथा छक्का था। नुमान अनवर का 70 रन बनाकर नॉट आउट है। इस बार ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से ऊपर से उठा दिया। एक और छक्का, ये लगातार दूसरा छक्का। 5वां अनवर के बैट से लगता हुआ 76 पर पहुंचे और सेंचुरी बनाने के लिए एक बेहतरीन मौका है उनके पास। केवल 42 गेंदों का सामना किया, 7 चौके और 5 छक्के लगाए। शानदार बैटिंग कर रहे हैं नुमान अनवर। What an innings he's played, Isha. He's really in good touch, playing shots all around the wicket. Absolutely wonderful to watch the boys tonight. It's an incredible experience out here in Carlton, Texas. The weather is incredible, and the boys are just showing their phenomenal skills. Happy to be here with you, sir, and appreciate this wonderful, wonderful moment. The weather is, of course, fantastic. No, but how was it short while ago when the match began? It was absolutely humid and hot, and I'm really glad that the sun went down, and now we can get to enjoy this beautiful game in a great weather. Over so far. One more ball remaining. Second over from Reddy. He's already conceded 28 runs. This time playing the ball straight to the fielder. So end of over number 14. After 14 overs, Dallas Knights are 152 for 4 wickets. So after 14 overs, 152, they are heading towards a very big total. They chased 219 Isha in their last match against Punjab, and 200 score looks very much possible here. What do you say?
And TCA will be chasing a huge total here. They lost the toss. Bajwa and Anwar are in the middle. 76 not out is Numan Anwar. Six bowlers have been used so far by the TCA captain. Anwar on strike. 24 runs he requires for his 100-year. So many overs remaining after this one. Playing the ball nicely to sweeper covers, and he goes for a single here. Moving on to 77. He's played some magnificent strokes so far. Entertaining the sparse crowd here. Oh, there was a chance for a catch, but the wicketkeeper missing it, and they get runs. It's a boundary here, lucky boundary here for Bajwa. Usman. He moves on to 7. Oh. Appeal here, but umpires. So no damage done. On strike is उस्मान बाजवा. ये 15वां ओवर है डैलस नाइट्स के इनिंग्स में. दास की अगली गेंद लेग स्टंप पर और ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, लेकिन ठीक से बल्ले पर ले नहीं पाए, लेकिन एक रन लेने का मौका मिला. आशीष दास ने एक विकेट लिया. पहला जो विकेट था दास को मिला था. लहीरू मिलांता को उन्होंने आउट कराया. से बॉलिंग कर रहे हैं और सामना करेंगे अनवर. आप सबके बहुत ज़्यादा बार. अंपायर ने वाइड का इशारा किया. सुब्बू चक्रपानी और श्रीकांत इस मैच में. So this is the third over from Ashish Das. It's bowled well today. Coming down the track and sixer from Numan Anwar. He moves on to 83 here. He's got a great opportunity to score a century after 15 overs. 166 for 4 wickets Dallas Knights.
मोड़ दिया, केवल एक ही रन मिलेगा और 83 रन बनाकर नॉट आउट है। 17 रन चाहिए नुमान अनवर को। आज 6 छक्के और 7 चौके लगाए। अब स्ट्राइक पर रहेंगे। ये 16वां ओवर है डैलस नाइट्स के इनिंग्स में। और टॉस जीता अली शेख ने और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। शॉर्ट बॉल और गेंद को पुल कर दिया मिड विकेट पर। वहां पे कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। जंप करते हुए कैच लेने की कोशिश की लेकिन उनके ऊपर से निकल गई। एक और छक्का अनवर के बैट से लगता हुआ 7वां छक्का। 7 बाउंड्रीज लगाए अब तक उन्होंने अपने इनिंग्स में और स्कोर उनका पहुंचा 89 नॉट आउट। 2 शॉट्स चाहिए उनको सेंचुरी पूरा करने के लिए। सामना कर रहे हैं लीड लड़ा का। इस बार गेंद को घुमा दिया ऑन साइड में। काफी काम करना पड़ रहा है फील्डर को जब तक गेंद को वहां मिड विकेट के फील्डर रोकते। 2 रन लेने का मौका मिला और 91 स्कोर अनवर का। बेहतरीन पारी खेलते हुए ये 16वां ओवर है और 4 ओवर उनके पास रहेंगे। 6 विकेट उनके हाथ में। बॉलिंग कर रहे हैं साहिल लड्डा। उनका तीसरा ओवर। काफी महंगे साबित हुए आज साहिल लड्डा। अब तक उनको कोई भी विकेट नहीं मिला है। प्रति ओवर में लगभग अब तक 15 रन दिए अब तक। अच्छी गेंद फिर से एक बार स्क्वायर लेग मिड विकेट के बीच में खेला। दूसरा रन लेने का मौका मिला। बढ़िया थ्रो लेकिन क्रीज पर आ चुके थे वहां पे अनवर और उनका स्कोर पहुंचा 93। 7 रन चाहिए उनको सेंचुरी बनाने के लिए। नुमान अनवर शानदार बैटिंग करते हुए 7 चौके और 7 छक्के लगाए अब तक। तीसरा ओवर लड़ा का और इनिंग्स में 16वां ओवर। एक बड़ा स्कोर की तरफ अग्रसर होते हुए यहां पे डैलस नाइट्स टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करते हुए। एक और रन, दूसरा रन लेना चाहते हैं और दूसरा रन के लिए दौड़े और पूरा भी कर लिए। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अच्छा कॉल था अनवर का और उसको स्वीकार किया उस्मान ने। अब एक शॉट चाहिए उनको और ये देखना है कि किस प्रकार से सेंचुरी बनाते हैं, चौका लगा के या छक्का लगा के। अब उनको छक्का लगाना चाहिए। इस ओवर में केवल एक गेंद बचा है। 179 फॉर 4। लटा गेंद और धीरे से ऑन साइड में खेला। 1 रन के लिए दूसरा रन लेने का मौका यहां पे मिलेगा। फिर से एक बार अच्छी रनिंग और करीब आ गए ओवर की समाप्ति। आफ्टर 16 overs 181 for 4 wickets. Anwar is not out 97.
Anwar is 97 not out, but he's at the non-striking end at the moment. And on strike is Usman Bajwa. "24 balls remaining, 6 wickets in hand." And this time Bajwa plays a lofted shot, not connecting it properly, but he gets 1 run. And that brings Numan Anwar on strike here. He needs 300. Already you can hear a round of applause from the dugout. He's batted brilliantly for Dallas Knights today. So this is the 17th over. On strike is Anwar. Playing the ball nicely. He can get a second run here. And they have completed 2 runs and appeals for an out. And umpire says he's out. And Usman Bajwa is in fact sacrificed his wicket here, going for that second run. So Dallas Knights lose their 5th wicket. And Anwar is 98 not out. Seventeenth over in progress in Dallas innings, and the new batter has just come in. Anwar is still there, is 97 not out. Outside the line of the off stump, and he plays it nicely. He's going to get a boundary here, and he reaches his 100. Numan Anwar is 102 not out with that boundary. He raises his bat in the air. What a knock he's played. He's hit 8 boundaries and 7 sixes in his knock of 102 not out. Magnificent innings from Numan Anwar today. And the score moves on to 187 with that boundary for 5 wickets. The new batter who's coming in is Abhiram, who is at the non-striking end. So congratulations to Numan Anwar for his brilliant performance today. Ashok bowling a short delivery again outside the line of the off stump, and Anwar hitting it straight to the fielder in the covers. No chance of error. 102 not out of just 53 balls he has faced. 8 boundaries and 7 sixes he has hit so far. He's still going great guns here. And this time hits it in the air, and the fielder misfields. So it's a boundary here. So Anwar trying to hit it over mid-wicket. Not timing it properly, but still he gets a boundary here. And with that boundary, he moves on to 106. The total of Dallas Knights is 191 now for 5 wickets. 3 overs remaining after this one. This time he hits the ball straight into the hands, but he drops it
and the ball falls over the boundary line. A lucky 6 here for Anwar. He moves on to 112, and after 17 overs, Dallas Knights are 197 for 5 wickets. तीन ओवर बाकी है डैलस नाइट्स के इनिंग्स में. 112 रन बनाकर नॉट आउट है अनवर. 8 छक्के और 9 चौके लगाए अब तक. 203.64 उनका औसत अब तक चला है. और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी पारी खेल रहे हैं. अभिराम स्ट्राइक पर. बाजवा के आउट होने के बाद खेलने के लिए आए और पहला रन उनका ऑन साइड में स्क्वायर लेग की तरफ खेला और अपना खाता उन्होंने खोला. अनवर फिर स्ट्राइक पे वापस आ गए. 112. एक बेहतरीन पारी खेली आज उन्होंने. काफ़ी सेंचुरीज बनाए गए इस टूर्नामेंट में अब तक. अनवर 112 नॉट आउट. गेंद को इस बार उठा दिया बॉलर के ऊपर से, लेकिन वहां पे एक शानदार एफर्ट था फील्डर का. कैच ड्रॉप हो गया और 2 रन लेने का मौका मिला अनवर को. दो रन के साथ 114 पर पहुंचे. 18वां ओवर और 2 ओवर रहेंगे इसके बाद. और बॉलिंग कर रहे हैं धवन. उनका ये आखिरी ओवर है. अच्छी बॉलिंग की उन्होंने अब तक, लेकिन कोई विकेट उनको नहीं मिला. ऑन साइड में फिर से ड्राइव किया लॉन्ग ऑन की तरफ. केवल 1 ही रन मिलेगा अनवर को. अब स्ट्राइक पर अभिराम रहेंगे. 5 विकेट गिर चुके हैं. और टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का फैसला किया अली शेख ने. हवा में गेंद, लेकिन काफ़ी दूर खिलाड़ी वहां पे, और केवल 1 रन मिलेगा. और जितना हो सके अनवर स्ट्राइक लेने की कोशिश कर रहे हैं. और स्ट्राइक उनके पास रहना काफ़ी अच्छा काम होगा, क्योंकि काफ़ी देर से खेल रहे हैं और सेट हो चुके हैं. इस बार पैडल स्वीप शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन ठीक तरह से ले नहीं पाए बल्ले पर. लेकिन 1 रन लेने का मौका मिला. डैलस नाइट्स के खाते में एक और रन. स्ट्राइक पर अभिराम रहेंगे. आखिरी गेंद इस ओवर में. 203 रन स्कोर अब तक. और काफ़ी ऊपर उठाया गेंद को, लेकिन खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं. और अंपायर का सिग्नल इंतज़ार करेंगे हम. अभी भी कंफर्म कर रहे हैं अंपायर वहां पे, श्रीकांत. और श्रीकांत ने कहा कि ये छक्का. और इसी के साथ ओवर की समाप्ति. आफ्टर 18 overs, 209 for 5 wickets Dallas Knights.
Penultimate over has begun in Dallas Knights innings. And one more over remaining after this one. 209 for 5 wickets. There have been a lot of changes this year in TCA team. Ram Mahavadi also played for them last year. And so many youngsters have been included this year as well. So great opportunity for all these young ones to showcase their talent. Anwar is 116 not out of 58 deliveries, 9 boundaries and 8 sixes he has hit so far. He is at the striking end. Well bowled. He's going to get some runs here. Going for the second, and they complete it quite comfortably in the end. The wicketkeeper appeals for a run out, but I don't think he was well in. So good running between the wickets. So this is the last over from Das. 19th over in Dallas Knights innings. 211 already on the board for 5 wickets. The highest total in this tournament has been made by Punjab Lions. 243 they scored in one match, in their first match in fact. Then they scored 218. And yesterday they lost to JPC Thunders. So they are under pressure in this tournament, the defending champions. The most dominant team in Dallas Premier League cricket tournament. They have scored more than 600 runs but lost 2 matches. Can we imagine that? Das misses his run up here. On strike is Numan Anwar, 118 not out. 60 balls he has faced so far. This time hitting the ball in the air, but the fielder is a bit far there and he misfields. So it's a lucky boundary. All working out well for Numan Anwar here. It's been his day, his evening so far. And he moves on to 122 with that boundary. Abhiram is at the non-striking end, 8 not out. He's hit 1-6. He's faced only 3 deliveries. So 19th over in Dallas Knights innings. And we're playing a good stroke again. And it's crossed the boundary line here. Oh, what a shot that was from Anwar. Back-to-back boundaries. And he moves on to 126. And the total of Dallas Knights is 219. Still 8 deliveries remaining. And more importantly for them, Anwar is on strike. This time plays the ball in there. There is a chance of a catch. But the fielder doesn't get to it. He tried his best. He had to run a lot of ground. So Anwar gets only 1 run. Not timing the ball. He was aiming to hit the ball over mid-wicket. So end of over number 19 here. And after 19 overs, the score of Dallas Knights will mention shortly because there is some confusion here. The umpires are checking. But 19 overs have completed in Dallas Knights innings. And only 1 remaining. They've lost 5 wickets. So Numan Anwar has scored a magnificent century for them today. He's still there.
आखिरी ओवर की पहली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से 4 रन के लिए गेंद को बेहतरीन शॉट खेला। ये इनिंग्स का आखिरी ओवर है और शानदार बैटिंग कर रहे हैं नुमान अनवर। शॉट गेंद पुल कर दिया गेंद को मिड विकेट के ऊपर से। लॉन्ग ऑन के ऊपर से उनको हवा में खेला, दूसरा रन का बल्ले पे और 2 रन के साथ 232 स्कोर हुआ। 139 पर पहुंचे, टॉप स्कोरर रहे अब तक इस टूर्नामेंट में। डैलस प्रीमियर लीग 2022 का एडिशन, ये दूसरा फेज है। इस टूर्नामेंट के प्लेऑफ मैचेस 29 और 30 तारीख को खेले जाएंगे। उसके बाद अक्टूबर 1 को ग्रैंड फिनाले होगा। शॉट बॉल और धीरे से अंपायर अभी उनके हाथ से छूट गई। अनवर को लेकिन 1 रन लेने का मौका मिला। 233 for 5 wickets lost in Numan Anwar is on. He's 100 not out. 67 balls he has faced, 12 boundaries. Shot. So end Dallas Knights innings here. 240 they have scored. So 241 will be the target for TCA today. And Numan Anwar has remained 146 not out of 68 balls, hitting 12 boundaries and 10 sixes. Keep watching DPL Facebook and YouTube channels. We are
DPL, viewers, Dallas Knights scored 240 for 5 wickets in their stipulated 20 overs. So that means 241 is the target for TCA team today. Huge score they are going to chase, but huge scores have been chased in this tournament. Dallas Knights chased 219 against Punjab. Numan Anwar scored a brilliant 146 not out of 68 deliveries, 12 boundaries and 10 sixes he hit. Today, to win the match, they are yet to open their account in this tournament. They have included a lot of youngsters. Great opportunity for all these young ones. So the match has been a field. Title sponsors, Innova Solutions, the first conducted by North Texas Cricket Association. The organizers Hejaz Bhai and Anwar Shabuddin have done a fantastic job. So Khanna is the batter, and Ajinkya Paikene is another batter. So Khanna opens his account, playing the ball nicely towards point. So this is the first over in their innings. So they are chasing 241 to win. Very difficult target. So first over in progress, 241 is the target for TCA today. And both these openers have to bat well, Khanna and Pakene. Saikant Akanuri is the bowler. Started the proceedings here for Dallas Knights. So Dallas Knights have been outstanding in this tournament. And if they win today, they'll be through to the finals. So they will be through to the playoffs, sorry. Well bowled, well played. They're going to get a single here. It's been a good tight over from Saikant Akanuri. Bowled well against JPC Thunders in the first match. And then Dallas Knights chased 219 against Punjab Lions, the defending champions. In the air, there is a chance of a catch, but it goes over the fielder. And good effort made by the square third man fielder, but no chance for him. So it's a boundary. So first boundary for TCA team here.
सो 241 रन चाहिए मैच में विजय हासिल करने के लिए। टीसीए को एक बड़ा टारगेट उनके सामने आज, और वहाँ पे फील्डर को इंजरी हो गई थी। गेंद को रोकने की कोशिश की डाइव लगा के, और एक चोट लगी है और इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट को आना पड़ा, डॉक्टर को आना पड़ा। खन्ना और पैकेने बैटर्स 4-4 रन बनाकर खेल रहे हैं, और अकनूरी ने 8 रन दिए फर्स्ट ओवर में। बहुत बड़ा टारगेट सीटीए के सामने आज रखा गया। नुमान अनवर ने सेंचुरी बनाई थी, बेहतरीन बैटिंग का उन्होंने नमूना दिखाया आज। और टीसीए काफ़ी निराशाजनक रहा उनका प्रदर्शन अब तक का। फर्स्ट मैच काफ़ी टाइट था अगेंस्ट स्पार्टन्स, लेकिन उसके बाद पंजाब लायंस के विरुद्ध हार गए। एक बड़ा विक्ट्री हासिल किया उस मैच में। पंजाब लायंस ने 200 के ऊपर रन बनाए, और इस मैच में अब देखना है कि 241 टारगेट को किस प्रकार से चेज करने की कोशिश करेंगे। एक अच्छी शुरुआत की आवश्यकता है उनको। खन्ना और पैकेने नॉट आउट है, और दूसरा ओवर शुरू हो रहा है। कमेंट्री दूर वाले छोर से। एक ओवर सायकांत अकनूरी ने किया, पहला ओवर था टीसीए के इनिंग्स में। अब 233 रन चाहिए उनको मैच में विक्ट्री हासिल करने के लिए। एक लंबा टारगेट उनके सामने, और 2-3 अच्छी पार्टनरशिप्स चाहिए उनको, तभी वे मैच में विक्ट्री हासिल कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल काम उनके सामने, क्योंकि डैलस नाइट्स की बॉलिंग लाइनअप काफ़ी अच्छी है, और अब तक उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी काम आया। बहुत हाई कॉन्फिडेंस चला उनका। 2 मैचेस में 2 विक्ट्रीज हासिल किए। पहले मैच में जेपीसी थंडर्स को हरा दिए। 75 का टारगेट बड़े आराम के साथ उन्होंने चेज किया, और उसके बाद 219 जो टारगेट उनके सामने था अगेंस्ट पंजाब लायंस, उस टारगेट को भी उन्होंने चेज किया, और आज 240 रन बनाए। अनवर ने फिर से बेहतरीन बैटिंग का नमूना दिखाया, सेंचुरी बनाए, नॉट आउट रहे आखिर तक। धुआंधार पाली खेली आज नुमान अनवर ने। दूसरा ओवर टीसीए के इनिंग्स में। ये सेकंड फेज है इस टूर्नामेंट का। अगर डैलस नाइट्स आज जीत जाते हैं तो प्ले ऑफ में पहुंच जाएंगे, और इस ग्रुप में टॉप करने के लिए उनके पास एक बड़ा मौका होगा, क्योंकि जो टीम टॉप करेगा हर ग्रुप में उसके पास एक बेहतरीन मौका रहता है डायरेक्ट फाइनल में प्रवेश करने के लिए प्ले ऑफ में जीतने के बाद। और A1 वर्सेस B2 का मैच चलेगा। अगली गेंद नए ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर, और उसे पॉइंट की तरफ खेला। बल्लेबाज ने रन लेने का मौका नहीं मिला। दूर वाले छोर से स्पिनर से शुरुआत की जा रही है। लेफ्ट आर्म स्पिनर बिटवीन अंपायर एंड द स्टंप्स। फ्लाइटेड बॉल, और उसे जोर से हवा में खेला लॉन्ग ऑन की तरफ। केवल एक ही रन मिलेगा बल्लेबाज को। खन्ना और अजिंक्य उद्घाटक बल्लेबाज के रूप में खेलने के लिए आए। स्कोर 9 रन। एक बहुत ही लंबा टारगेट उनके सामने, और बॉलर है अली शेख कप्तान, बेहतरीन गेंदबाज। पिछले साल पंजाब लायंस के लिए खेले, और इस बार कप्तानी करने का मौका मिला उनको डैलस नाइट्स के लिए। अच्छी गेंद थी और धीरे से खेला ऑन साइड में बैटर ने, और रन लेने का कोई मौका नहीं मिला। दोनों ओपनर्स को जम के खेलना होगा, संभाल के खेलना होगा, क्योंकि जब एक बड़ा टारगेट उनके सामने होता है तो दबाव ज़रूर रहता है खिलाड़ियों पर। शॉर्ट गेंद, और उसे पुल कर दिया गैप में, और काफ़ी तेज़ी से बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। ये पहला एक और चौका
टीसीए के लिए। शॉर्ट गेंद थी और बल्लेबाज ने तेजी से गेंद को खेला 4 रन के लिए। स्कोर पहुंचा 13। ये दूसरा ओवर। पावर प्ले में कम से कम उनको 60-70 रन बनाना चाहिए। एक अच्छी शुरुआत चाहिए यहाँ पे टीसीए के लिए, तभी वे मैच में जीतने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। अच्छी गेंद और धीरे से गेंद को ऑन साइड में बल्लेबाज ने खेला और 1 रन लेने का मौका मिला। खन्ना बहुत बढ़िया खिलाड़ी है टीसीए की टीम में, काफ़ी यंगस्टर्स है टीसीए की टीम में और इन सब के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट गेंद शेख का और पंच करने का एक मौका था वहाँ पे, लेकिन स्ट्रेट टू द फील्डर और रन लेने के लिए कोई मौका नहीं मिला। 2 ओवर के बाद 15 रन बिना कोई विकेट खोए टीसीए। शॉर्ट बॉल और गेंद को 4 रन के लिए एक और चौका टीसीए के लिए। और अच्छी शुरुआत चाहिए क्योंकि 241 का टारगेट उनके सामने, बहुत ही लंबा टारगेट चेज करना पड़ रहा है आज। और टीसीए ने अभी तक कोई मैच में विजय हासिल नहीं किया इस प्रतियोगिता में। थोड़ी शॉट थी और गेंद को कवर के ऊपर से उठा दिया 4 रन के लिए। ये तीसरा ओवर उनके इनिंग्स में। लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर और ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, पूरी तरह चूके। तेरह रन बनाकर नॉट आउट खन्ना। आक्रामक रवैया अपनाए हुए और चाहिए भी उनको क्योंकि 241 का टारगेट काफ़ी बड़ा टारगेट है। इस बार शॉर्ट पिच बाउंसर अकुनूरी का काफ़ी तेजी से विकेट कीपर के हाथ में गई। डेक को हिट किया था साइकांत अकुनूरी, जिन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की इस टूर्नामेंट में। एक बेहतरीन गेंदबाज है और अभिषेक काफ़ी रन दिए थे अपने फर्स्ट ओवर में। ये तीसरा ओवर। इस बार मिड विकेट के ऊपर से उठाना चाह रहे थे लेकिन टाइमिंग ठीक तरह से कर नहीं पाए। रन्स मिलेंगे बल्लेबाज को। 2 रन आराम के साथ अजिंक्य और खन्ना शॉट्स खेलने लगे। काफ़ी ओवर्स उनके पास है और तेजी से उनको रन्स बनाना चाहिए। पावर प्ले को काफ़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए दोनों को।
क्योंकि डालस नाइट्स ने वही काम किया था। ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गति की गेंद और रन लेने का कोई मौका नहीं मिला। अजिंक्य 15 रन बनाकर नॉट आउट है और खन्ना 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। केवल 9 गेंदों का सामना किया अजिंक्य ने। ये तीसरा ओवर, 241 टारगेट। बॉलिंग कर रहे हैं अकुनुरी, दाहिने हाथ के मध्यम तेज गति के गेंदबाज। आप स्टंप पर और धीरे से गेंद को ऑफ साइड में खेला और 1 रन के लिए दौड़ पड़े बैटर। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अच्छा कॉल था और बखूबी से निभाया। इस प्रकार से तीसरी ओवर की समाप्ति और टारगेट 241। डोंट गो एनीवेयर, कीप वाचिंग DPL YouTube and DPL Facebook channels. We're back very shortly. सुंदर शॉट पॉइंट की तरफ खेला 4 रन के लिए। चौथा ओवर शुरू हो चुका है टीसी के इनिंग्स में। खेल रहे हैं फिलहाल। और अकुर ने 2 किए और ये चौथा ओवर है टीसीए के इनिंग्स में। उनके सामने एक बहुत ही बड़ा टारगेट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि विक्ट्री चाहिए। अभी तक कोई भी मैच में विक्ट्री। और एक तरफ डैलस मैचेस के लिए 2 में बढ़िया विक्ट्रीज हासिल किए सबसे पहले, और उसके बाद एक लंबा टारगेट 200 के ऊपर चेज किया अगेंस्ट पंजाब लायंस। 219 का वो टारगेट था और आज अनवर ने एक और बेहतरीन पारी खेली, शतक लगाए, नॉट आउट रहे आखिर तक। 140 रन अच्छी बैट और श्रीलंकन इस बार कवर के ऊपर से उठा दिया और अंपायर ने कहा यह छक्का। बहुत अच्छा शॉट, जमकर खेल रहे हैं एक तरफ अजिंक्य और ये पहला छक्का टीसीए के इनिंग्स में।
हाफ स्टंप के बाहर थी गेंद अभिराम की और भरपूर स्ट्रोक खेला, हाफ वाली पे लिया और कवर के ऊपर से उठा दिया गेंद को 6 रन के लिए बल्लेबाज ने। इसी तरह से खेलना होगा क्योंकि काफी लंबा टारगेट उनके सामने है। इस बार ड्राइव करना चाह रहे थे बॉलर के ऊपर से, लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं मिला। अजिंक्य 4 चौके और 1 छक्का लगाए अब तक उनके इनिंग्स में। अभिराम का पहला ओवर अब तक काफ़ी महंगे साबित हुए। इसमें 1 चौका और 1 छक्का लगाने के लिए मौका मिला अजिंक्य को। 1 शॉट उन्होंने पॉइंट के ऊपर से खेला और 1 कवर के ऊपर से 6 रन। बेहतरीन फॉर्म में नजर आते हुए अजिंक्य पैके ने इस बार शॉर्ट गेम और गेंद को ग्लाइड किया डीप और 1 रन लेने का मौका मिला। अब स्ट्राइक पर रहेंगे अनय काफी देर के बाद और स्कोर 33 रन बिना कोई विकेट खोए। टीसीए 241 का टारगेट उनके सामने। आज डैलस नाइट्स ने 240 रन बनाए। अनवर ने एक धुआंधारी पारी खेली, सेंचुरी बनाकर नॉट आउट रहे 146 रन बनाकर, और उसका जवाब अब तक तो अच्छा ही दिया यहाँ पे टीसीए के ओपनर्स ने। थोड़ी सी बाहर इस बार अभिराम और पूरी तरह बीट हो गए वहाँ पे बल्लेबाज। खेलना चाह रहे थे ऑफसाइड में। अनय खन्ना एक शीट एंकर रोल प्ले कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन उनको भी खुल के खेलना होगा क्योंकि ये 4था ओवर है और रन रेट अब उनको 11-12 चाहिए प्रति ओवर में। अब से काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि 241 टारगेट 20 ओवर्स में काफ़ी बड़ा टारगेट होता है कोई भी लेवल के टूर्नामेंट में, चाहे राष्ट्रीय टूर्नामेंट हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट हो, चाहे लीग टूर्नामेंट हो। इस बार ड्राइव किया और गेंद फील्डर के पास, 1 रन लेने का मौका मिला और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 34 रन बिना कोई विकेट खोए, 4 ओवर की समाप्ति। लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक छक्का लगा दिया। ओवर पिच बॉल थी, आगे आए और खूब गेंद को 6 रन के लिए। ये दूसरा छक्का टीसीए के इनिंग्स में और पहला छक्का आने के बैट से लगता हुआ। अब वे भी जम के खेलने लगे। ये 5वां ओवर है और स्कोर पहुंचा 40 रन। $241 का टारगेट टीसीए के सामने, एक बहुत ही बड़ा टारगेट। और अब तक शुरुआत काफ़ी अच्छी रही। पावर प्ले में रन्स तो बन रहे हैं, विकेट भी नहीं खोया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट उनके लिए। अनय सामना कर रहे हैं इस बार
एक टेनिस जैसा फोरहैंड शॉट खेलना चाह रहे थे ऑफ साइड में, लेकिन गेंद गई सीधा फील्डर के पास। 12 रन बनाकर नॉट आउट है और ये तीसरा ओवर है अकुनूरी का। कमेंट्री बॉक्स एंड से बॉलिंग कर रहे हैं, उसी एंड से उन्होंने शुरू किया आज अपनी बॉलिंग। 5वां ओवर टीसीए के इनिंग्स में। शॉर्ट बॉल इस बार फिर से टेनिस शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पे मैदान पर, सीधा फील्डर के पास, रन लेने का मौका नहीं मिला। अनय 11 गेंदों का सामना किया, लेकिन अजिंक्य जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 15 गेंदों में अब तक 27 रन बनाए, 4 चौके और 1 छक्का लगाए। सीधा वहां पे हाथ में हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा दूर थे वहां पे खिलाड़ी। शॉट मिस टाइम हुआ। मिडान के ऊपर से चिप शॉट खेलना चाह रहे थे अनय खन्ना, लेकिन ठीक तरह से टाइमिंग नहीं कर पाए और दोनों बल्लेबाज के बीच में सलाह मशवरा, क्योंकि पावर प्ले में और 1 ओवर बाकी है इसके बाद। और शुरुआत तो अच्छी रही है, लेकिन रन्स चाहिए, काफ़ी तेज़ी से रन्स चाहिए, क्योंकि औसत बढ़ रहा है, रन रेट बढ़ रहा है उनके ऊपर। एक बार बल्ला घुमाया और गेंद गई विकेट कीपर के पास। अच्छी गेंद अकुनूरी की। उस छक्के के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छा कमबैक किया इस ओवर में। साईकांत अकुनूरी लंबे कद के खिलाड़ी बॉलिंग कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से, और उनका सामना करते हुए अनय खन्ना, क्योंकि दाएं हाथ के बल्लेबाज, दोनों राइट हैंडेड बैटर्स ओपनर्स। हवा में गेंद और बहुत ही शानदार डाइव लगा के कैच लिया। यहां पे देखना है कि अंपायर अभी भी चेक कर रहे हैं, लेकिन यहां से तो लगा कि बहुत ही बेहतरीन कैच था। अभी भी कंफर्म करने के लिए वहां पे अंपायर जाते हुए, नहीं, हाथ में आने के बाद गेंद हाथ से निकल गई शायद, या हाथ जमीन को लगा और अंपायर ने इसीलिए नॉट आउट कहा आखिर में। लेकिन बहुत ही बेहतरीन एफर्ट लगाया वहां पे फील्डर ने, और एक मौका मिला यहां पे बैटर को। और ओवर की समाप्ति 5 ओवर के बाद 40 रन बिना कोई विकेट खोए टीसीए, और उनको चाहिए 241 रन मैच में जीतने के लिए।
final over in power play. Good partnership going on, but they need runs quickly here. This time the batter hits it straight into the hands, and TCA lose their first wicket. So he was playing well, and this time the ball has been hit straight into the mid-off fielder. So TCA lose their first wicket. And Ali Sheikh is the bowler. The captain gets the breakthrough for Dallas Knights. Yeah, you can. So TCA are 43 for 1, chasing 241. The new batter who's come in is Roshan Wanam. And Ali Sheikh, the captain, bowled 2 good overs. He's considered only 9 runs, also getting that important wicket. So new over begins here. So Roshan Wanam is the new batter. Anay Khanna was the batter out, caught by Samuels at mid-off for 13. He faced 18 deliveries and hit 1-6 in his innings. This time the ball going straight to the fielder. Roshan Wanam is the new batter. Ajinkya is 30 not out. This is the 7th over. Power play is over. This time they cross for a single here. They can get second. Thick outside the edge, and the ball going towards the third man area. So they need a partnership again here. Under pressure is TCA team. And Dallas Knights almost are on the verge of making it to the playoffs in this year's edition. They have been outstanding in this tournament, scoring 2 fantastic victories. And today they are defending. The previous 2 matches they chased. One a short target and one a huge target. Outside the line of the off stump from Sahan Jayasurya. He bats left-handed and he bowls with right arm. An ambidextrous cricketer from Sri Lanka who played quite a few matches. He shifted to America in 2018-19 and he's been very successful here. The top scorer in minor league cricket tournament. Outside the off stump again, beating the bat. Good tight over from Jayasurya. So 7 overs completed here. 46 for 1 wicket. TCA chasing a target of 241.
Eighth over begins here in TCA innings. Sorry. Yeah. Huge target in front of them today, 241. Russian Vanam and Ajinkya Pakene are the batters. Ajinkya is on strike. He's in good touch today. 32 not out. Again plays a beautiful stroke between mid-on and mid-wicket. Excellent effort by the fielder there. He had to cover a lot of ground. Umpires are checking. So he certainly saved 3 runs there. But Ajinkya is really playing well. He's hitting the ball nicely. Ali Sheikh, the captain, his third over. He's got it off Amay Khanna in his last over. Again, an extra leg by umpire says. So Ajinkya is back on strike. Pressure increasing here on TCA batters. Good stroke from Ajinkya, but he's going to get only 1 run here. Sheikh bowling in his third over, hitting the ball in the air, but safely, only for a single. Russian Vanam. Coach up there too when I was in Seattle. They have a huge So 9th over in progress in TCA innings. 54 for 1 wicket. The wicket of Anay Khanna was caught by Samuel of Ali for 13. And Ajinkya, who is 35 not out, is on strike. He's faced 24 balls, hitting 4 boundaries and a sixer. Jayasuriya continuing. Second over. Oh, that was a very good delivery from Jayasuriya. Beating the batter completely. He's a very good all-rounder, Sehan Jayasuriya. Bowling from round the wickets. Driven nicely by Ajinkya, but there is a fielder. No, nobody gets to it. So it's a boundary. A welcome boundary here. They need more like this. He hit it straight past the bowler. A super stroke from Ajinkya. That is his 5th boundary. He moves on to 39 with that. And the score moves on to 58. They are in the 9th over. This time in the air. And it's over, long on for a 6. A boundary and a 6 in consecutive deliveries from Ajinkya Pakane, who's really looked in good touch today. He moves on to 45.
nearing his half century. He's played some glorious shots today. Jayasuriya flighting the ball and getting the punishment. Short delivery, straight to the fielder, no runs scored. Been an expensive over from Jayasuriya. This time a good delivery, and Ajinkya plays the ball straight to the fielder. Tenth over getting underway here. 66 for the loss of one wicket. The batter out is Anay Khanna, caught by Samuels of Ali for 13. Faced 18 balls and hit one sixer. And Ajinkya is 46 not out. He is on strike here. There seems to be a bowling change. No. From the far end. Full toss and Ajinkya hits it in the air. Hits it over mid-wicket here. I think it's a boundary. Ajinkya is really playing good shots here. And he moves on to his 50 with that boundary. Excellent innings by Ajinkya Paikane. 50 not out of 30 deliveries. 6 boundaries and 2 sixes he has hit. It's really looked in good touch so far. This time hitting it magnificently again. And a fielder outside the boundary line, a spectator rather, catches it. And it's a 6. So Ajinkya is on fire here. 56 not out with that sixer. This is the 10th over. 76 for one wicket. This time plays it nicely on the offside. Gets only one run. And he moves on to 57. And the total moves on to 77 here. This is only the 10th over. But the target is too high for them. And here, Perumalla gets his first wicket. Samuel Perumalla. So second wicket has fallen in TCA innings. Rochan Vanam going for a big shot. Is clean bowled by Samuel Perumalla. The Sri Lankan has struck here for Dallas. And TCA have lost second wicket.
This is the 10th over in TCA innings. They have just lost their second wicket. Rachana Vanam was clean bowled by Samuels for 3 runs. And Ajinkya is still there, 57 not out. He's at the non-striking end. And the new batter who's joined him is Ishwar Gulapalli. So Samuel Paramala strikes for Dallas Knights. And Gulapalli is off the mark. The very first delivery he has faced, playing the ball towards long on. So he's 1 not out. Ajinkya is back on strike here. Samuel Parimolla is a good all-rounder. Bowling from the far end. Full toss. Excellently played, but there is a fielder at deep wide leg. And he's going to get only 1 run here. But it's been a very good over. Though some runs have been scored by the batters. And again they need a partnership here. 241. Looking very difficult at this juncture of the match. Still they need a lot of runs. Almost 15, more than 15 runs per over. Well played, and is the boundary line. Played it nicely towards quiet third man. It will definitely release a bit of pressure on them. So 10 overs completed here. So after 10 overs, 84 for the loss of 2 wickets, and their target today is 241. Eleventh over commencing from the commentary box end in TCA innings. 15.70 is the run rate they require. 8 wickets in hand and only 59 deliveries left. Hit nicely. Opined for a boundary here. They need more like this. Gulapalli is the new batter. And Rahane is really playing well today. This is Sanat Sehan Jayasurya's 3rd over, bowling from the commentary box end. Outside the line of the off stump, and the batter wanting to play it again in the same direction. But the ball goes straight to the fielder at point and no runs taken. Again wanting to hit it over mid. .63. Ishwar Gulapalli had just come in after the dismissal of Roshan Vanam. This is 11th over in TCA innings, and their target today is 241. Dallas Knights put up a huge total in front of them. Outside the line of the off stump, the ball keeping a bit low. Jayasurya is an intelligent bowler. This is his 3rd over. Delicate shot here. Playing it very fine. He's going to get some runs here. 2 runs easily taken. So it's been a good over so far for TCA.
So Jayasurya has completed his 3 overs and is conceded 22 runs in his 3 overs and is still waiting for his first wicket. So after 11 overs, TCA are 91 for the loss of 2 wickets. Twelfth over, beginning here with a boundary here. The first ball has been played nicely on the onside between long leg and fine leg. So good start here in the 12th over for TCA, but they need more boundaries like this because the run rate they require at this moment is 16.67, 8 wickets in hand. 95 for 2, 53 deliveries remaining, 146 is the target. This time hitting the ball and he's going to get only 1 run. Ajinkya Paika, so far the hero for team. And Ishwar trying to hit it again, not succeeding it. Parimalla got a wicket in his first over. It was a bit expensive, of course, in that over. Well, beats the batter completely on that occasion. Ishwar 68 not out is Ajinkya Paikane. Well bowled, well played, and he's going to get a single here. Parimalla is bowling a good over here. So this is the 12th over and 8 overs will be remaining. Innings. Still they need 144 in the remaining 49 deliveries. Task in front of them at the moment. Short delivery and Ajinkya plays the ball straight to the fine leg. And that is the end of number 12. So 12 over TCA 41 or 97 for 2 wickets. Appeals here and umpire is unmoved. They are still appealing. The Dallas Knights bowlers.
Subbu Chakrapani and Srikanth are officiating in this match. That was a loud appeal. And he's given out, yes, finally. The batter walked at last. So third wicket goes here in TCA innings. And Dallas Knights are celebrating. They're almost through to the playoffs here in this year's edition after scoring two excellent victories in the first phase of 2022 Dallas Premier League Championship. Today they are taking on TCA at the Sandy Lake Cricket Ground, a lovely cricket ground. They put up a huge total of 240, losing 5 wickets. And TCA are 98 now for 3 wickets. Still they require 143 runs. And Jayasurya has got his first wicket. This is his last over. He's been very economical as well today. Has conceded 24 runs, and the new batter who's come in is Madhivan Durrani. And Jayasurya has been able to dismiss. So they've got the most important wicket. Well bowled. Again beats the batter completely. Sehan Jayasurya scored a little cameo innings today. He bats with left hand and bowls with right arm. A good all-rounder, good ambidextrous cricketer. Over pitching the ball. But the batters will get only a single here. They require a huge partnership, and the pressure mounting. The run rate they require at this moment is 19.36. Huge target in front of them. Only a single again. And that in fact ends a good spell from Sehan Jayasurya. He has given away 27 runs, taking 1 wicket. That to the most important wicket of Ajinkya. So 100 coming up here for TCA. After 13 overs, they are 101 for 3 wickets. Still they require 140 runs in the remaining 42 deliveries. Samuel Perumalla is bowling in his third over. Inside edge, and the batters will get a single here. And singles and twos don't bother Dallas Knights here, because they put up a huge total of 240 and 139 still they need in 40 balls. 7 wickets in hand. Well bowled and played nicely this time in the gap. He's going to get a couple of runs here. Good chase by the fielder. So Durai and Ishwar Gullapalli are the batters. Durai is at the non-striking end. Ishwar Gullapalli is at the striking end. Perumalla is the bowler. His third over. Good shot, but there is a fielder at deep mid-wicket. They'll get only 1 run here. This is the 14th over in TCA innings. They're chasing a Herculean task here today. 241 is their target. And they are in troubles here. 20.85 is the run rate they require. Over pitch ball and hit it by the batter, but he'll get only a single here.
दबाव बढ़ता हुआ 21.47 का औसत चाहिए। 7 विकेट उनके पास है लेकिन केवल 37 गेंद। काफी मुश्किल होता जा। इस बार फुल टॉस पे लिया और ड्राइव किया केवल एक बल्लेबाज को, और इस प्रकार से ओवर की समाप्ति। 6 ओवर में 134 रन चाहिए। 107, 3 विकेट खोकर टीसीए। पंद्रहवां ओवर शुरू हो रहा है। 107 स्कोर। काफी लंबा टारगेट चेज कर रहे हैं लेग स्टंप के बाहर। बॉलिंग में परिवर्तन क्योंकि जयसूर्या का स्पेल पूरा हो चुका है। 4 ओवर में 27 रन दिए और 1 विकेट लिए, और डालस से न्यूयॉर्क तक दूर अब जाना चाहिए इस टारगेट को चेज करने के लिए। 241 का काफी लंबा टारगेट उनके सामने। ईश्वर गुल्लपल्ली और दुराई बैटिंग कर रहे हैं फिलहाल, और ये 15वां ओवर। 133 रन चाहिए। शॉर्ट बॉल और बहुत सुंदर कैच लिया वहां पे, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर। इस प्रकार से ये चौथा विकेट गिरा और विकेट मिला यहां पे मसूद अहमद को। ये उनका पहला ओवर है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश की वहां पे बैटर ने, लेकिन जंप करते हुए हवा में एक शानदार कैच लिया फील्डर ने, और इस प्रकार से ये चौथा विकेट गिरा टीसीए के इनिंग्स में। अली शेख ने कैच लिया। ये 15वां ओवर है और काफी प्रेशर यहां पे, क्योंकि 22.80 से रन बनाना है। अभी भी टीसीए बैटर्स को, और ईश्वर प्ले आउट हो गए। दुराई नॉट आउट है 4 रन बनाकर। अली शेख कप्तान ने कैच लिया। नए बल्लेबाज आशीष दास, और अपील कैच भी हैंड किया और इसी के साथ आउट। अब हैट्रिक के लिए मौका है यहां पे अहमद को। ये दूसरा विकेट उनको मिला और 5 खो गए यहां पे टीसी।
15th over was a good one here for Dallas Knights. They got 2 wickets. So he's still on, and Ahmed is on hat-trick here. Durai is just watching the drama at the non-striking. It is 4 not out. 108 is the score now, and the new batters prevents the bowler from getting that hat-trick, achieving that rare feat rather. So 24.18 is the required run rate. 32 balls and 132 runs they need. Rohan Dhawan is the batter and appeals for again, and is out. So 3rd wicket for Ahmed in this over. What an over it's been for him so far. That is in fact the last ball. Excellent bowling by Masood Ahmed, and TCA lose their 6th wicket here. Three wickets in 5 deliveries for Masood Ahmed in this over. 109 for 6 TCA, chasing 241 for a win, for their first win rather. 132 is the target now in remaining 5.1 overs. 25.55 is the run rate they require. And the new batter who's come in is a left-handed. Anshul Reddy bowled well today. So last ball from Ahmed in his first over, and Ahmed plays the ball nicely on the offside. End of a very successful over, very good over from Masood Ahmed, in which he got 3 wickets. So 109 for 6 TCA. Thirty deliveries remaining, 132 runs they require. A difficult target, but a good stroke played by Rohan Dhawan. Overcovers for a boundary here. That will definitely give them some relief here. 26.40 is the required run rate from now on. 29 balls and 128 runs they require. So Dallas Knights are on the verge of making it to the playoffs here. This is going to be their third straight victory. What a tournament they have had this year. One of the favorites in this edition. So Peramella has started his 4th over, final over. And Rohan Dhawan is on strike to him, 5 not out. 8 balls remaining, 4 wickets in hand, 128 they need. अच्छी गेंद और इसे ऑन साइड में खेला. दूसरा रन लेने का मौका नहीं है वहां पे, और एक ही रन से अंशु रेड्डी स्ट्राइक पर रहेंगे. और रन रेट काफी बढ़ रहा है यहाँ पे. हर ओवर में लगभग उनको 5 छक्के लगाना होगा अब से, क्योंकि 28.22 का रन रेट है और 127 रन चाहिए बचे हुए 4.3 गेंदों पर. 4 विकेट उनके पास.
बायां हाथ के बैटर रोहन अंशुल रेड्डी। ओवर पिच और उसे फ्लिक किया ऑन साइड में, केवल एक ही रन मिलेगा बैटर को। और इसी के साथ अंशु मसूद अहमद ने पिछले ओवर में 3 विकेट लिए और बहुत ही बढ़िया ओवर था, केवल और एक समय उनके पास हैट। पेरुमल्ला बहुत ही अच्छा सपोर्टिव रोल प्ले किया। ये उनका आखिरी ओवर है, 1 विकेट उनको मिला है। लेग स्टंप पहला रन थोड़ा सा स्लो दौड़ लिए बैटर्स और 125 रन चाहिए। 25 गेंद उनके पास। हर ओवर में, प्रति ओवर में 5 छक्के उनको लगाना होगा। काफी मुश्किल काम होता है कोई भी फॉर्मेट में। इस बार वहां फील्डर मौजूद, केवल एक ही रन मिलेगा और इस प्रकार से ओवर की समाप्ति। 16 ओवर के बाद 117, 6 विकेट खोकर अभी भी 124 रन चाहिए। सत्रहवां ओवर शुरू हुआ, हवा में गेंद लेकिन बाउंड लाइन के बाहर। 4 रन के लिए कोई मौका नहीं वहां पे खिलाड़ी को पॉइंट पर। मसूद अहमद के बॉलिंग में ये पहला चौका और आज स्टैलियंस के एक खिलाड़ी ने 190 रन बनाए, मिलिंद कुमार, जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी लास्ट एडिशन में। गौज और मिलिंद दोनों ने सेंचुरीज बनाए थे और इस साल अब तक 5-6 शतक बना चुके हैं बल्लेबाज। एक बड़ा स्कोरिंग टूर्नामेंट रहा 2022 डैलस प्रीमियर लीग का एडिशन। अहमद का दूसरा ओवर और आज मोशिन नहीं खेले और अनवर ने सेंचुरी बनाए। बैक पेन की वजह से मोशिन को टीम में इंक्लूड नहीं किया गया आज, लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं कि पंजाब के विरुद्ध उन्होंने एक धुआंधार पारी खेली थी। इस बार हवा में उठाया लेकिन केवल एक ही रन लेने का मौका मिलेगा रेड्डी को और वे पहुंचे 7 पर। 119 रन चाहिए। 22 बॉल्स बचे हैं उनके पास, 4 विकेट है। अच्छी गेंद और उसे ऑफ साइड में खेला, सीधा खिलाड़ी के पास, रन लेने का मौका नहीं मिला। हर ओवर में अब 6 छक्के चाहिए और सीधा वहां पे हाथ में और कैच कर लिए गए। इस प्रकार से ये 7वां विकेट गिरा। अहमद को 4था विकेट मिला, ये उनका दूसरा ओवर है और रोहन धवन आउट होकर वापस जा रहे हैं पवेलियन में। टीसीए ने अपना 7वां विकेट गंवाया। नए बल्लेबाज खेलने के लिए आए आरव अशोक
और अहमद ने अब तक 4 विकेट लिए, लेकिन मैन ऑफ द मैच के रेस में रहेंगे मेरे ख्याल से अनवर, जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी। नुवान अनवर, बेहतरीन बैटिंग का उन्होंने प्रदर्शन दिखाया आज। स्लिप पर एक खिला, अटैकिंग फील्ड यहाँ पे अशोक के लिए, और ये 17वां ओवर है। अब 19 गेंद उनके पास से 130 रन चाहिए। हर ओवर में 6 छक्का लगाना होगा, काफ़ी मुश्किल काम। और एक और सफलतम ओवर की समाप्ति अहमद की। 2 ओवर में 4 विकेट उन्होंने लिए, और 17 ओवर के बाद 122 7 विकेट को कर TCA। So Dallas Knights are almost on the verge of making it to the semi-finals, and thanks to Kiran for the information is passed on just now. Milind Kumar, who scored a century last year, made a whirlwind 190 today of 73 balls, 9 boundaries and 19 sixes he has hit, and with strike rate of 260. A very good all-rounder for Dallas Stallions. And they scored 278 for 4 in their stipulated 20 overs, the highest score so far in this tournament. And what an all-rounder Milind is. Congratulations to you, Milind. Super shot here from the left-handed Reddy, and he hits it cleanly this time. And umpire says it's a boundary. We have to wait for the signal again. I think it's still checking, I don't know. But it was a very good shot played by Anshul Reddy. Good stroke again. And there is a chance of a run out. But the batsmen are through here. Good running. So Ali Sheikh, the captain, bowling in his last over. This is the 18th in TCA innings. Huge target in front of them, and now it's almost impossible. 41.62 the run rate required. Even if they hit a 6 of every delivery, they are not going to reach the target. Well bowled by Ali Sheikh. Captain has really a superb spell today. It's been very economical. Okay, of the half stump, bowling between umpire and the stumps here. .240 for 5, or 3 dot deliveries, 3 excellent deliveries. Of captain's spell, 4 overs he bowled and 24 runs he conceded, also taking a wicket. So after still needing 110 runs to win the match. An impossible target in front of TCA now. 50.77. So they need 2 sixes of every ball. That cannot be done in cricket unless so many no balls and wides bowled by
the opposition. So Ahmed bowling in the penultimate over of TCA innings, driven nicely by Ashok, but there is a fielder and he gets one run. So he's off the mark here. That brings Reddy on the strike. Reddy has hit one boundary and one sixer, playing a little cameo innings, 16 not out of 8 deliveries. Outside the line of the leg stump, and umpire Subbu Chakrapani says it's a wide. This is the 19th over. Chasing a Herculean task today. TCA are almost on the verge of being knocked out in this tournament, and Dallas Knights will be the first team to make it to the playoffs in this group. Punjab Spartans and JPS Thunder still have chances. So the fight will be among the three teams. So TCA are out of the championship this edition, but they played some good cricket. The first game against Spartans was a close one, but the second game against Punjab put them under pressure when Punjab Lions scored 200 plus runs. Outside the off stump, and Ashok hits it very hard, but he will get only one run here. Ahmed has taken 4 wickets today. He took 3 wickets in 1 over. That was his first over. Only one more over to go after this one. Last ball in the penultimate over. Last ball in Ahmed's spell. The batter beaten completely. So end of a very good spell from Masood Ahmed. He's bowled 3 overs and he's given away 12 runs, getting 4 wickets. So 136 for 7 wickets TCA. So last over commencing in TCA innings. 105 is the target. Impossible. 105 is their run rate. And Saikant Akunuri, who bowled 3 tight overs in his first spell, has started the last over. Good throw from the fielder here, but just missing the stumps. It in fact hit the stumps, but the bails didn't come off. 104 they require. So Dallas Knights are through to the playoffs in this year's edition. It's been a great tournament for them so far. Akunuri bowls, but wait. Complete 2 runs here. Good running between the wickets. Anshul has played some good strokes. And only 4 deliveries left in their innings. 103. Impossible in cricket in 4 deliveries. Good delivery again from Akunuri. And the batters cross for a single here. So no signal from the umpire, maybe inside edge in that shot. So this is the last in TCA innings. And the Dallas Knights are on the verge of taking it to the
goes on to 4 with that single. So 241 का टारगेट डालस नाइट्स ने रखा टीसीए के सामने, और एक बहुत बड़ा विक्ट्री उनके लिए होगा। अब तक बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने दिखाया इस टूर्नामेंट में, और वहां पे रेड्डी ने हिट किया, अंशुल रेड्डी ने, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पे लॉन्ग ऑन पर, और केवल एक की है इस मैच में। और डैलस नाइट्स ने ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाया इस टूर्नामेंट में। पिछले मैच में 219 बनाया अगेंस्ट 15 पंजाब लायंस के विरुद्ध, चेज किया था टारगेट को, अच्छी गेंद छूट गया, और 1 रन के लिए दूसरा रन लेने का मौका मिला, और इस प्रकार से डैलस ने को हरा दिया। एक के लिए कंग्रेचुलेशंस टू डैलस नाइट्स। 241 का टारगेट रखा, लेकिन टीसीए करते रहे शुरुआत से, और इस प्रकार से डैलस नाइट्स से एक बेहतरीन विक्ट्री हासिल किया और प्लेऑफ में पहुंच गए। इस ग्रुप में पहला टीम है प्लेऑफ में पहुंचने वाला टीम, और काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा टीसीए का 22 के एडिशन में, 7वां एडिशन। इस साल 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, 10 टीम्स हालांकि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहां पे एक बड़ा विक्ट्री 96 रन से मैच को जीत लिया डैलस नाइट्स ने। कंग्रेचुलेशंस टू देम, डोंट गो एनीवेयर, वी आर बैक वेरी सून।
आज हमारे साथ है दोनों बेहतरीन बल्लेबाज जो कि पाकिस्तान के लिए फर्स्ट क्लास के लिए और यहाँ पे बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं इस एडिशन में 2022 एडिशन में। मेरे बाएं तरफ है अनवान अनवर जिन्होंने सेंचुरी बनाई है आज शानदार पारी खेली और लास्ट मैच में मोहम्मद मोहसिन ने एक धुआंधार पारी खेली थी और दोनों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, आज आप ओपनर के रूप में आए फिर से और एक बेहतरीन प्रदर्शन था आपका। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि हमारे लिए ये तीसरा गेम है हमारा और ऑब्वियसली पूल में टॉप पे रहने के लिए हमें अच्छे मार्जिन से जीतना था और यह है कि 100 भी किया अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह आगे प्ले ऑफ्स आ रहे हैं और आई होप कि इसी मोमेंटम को कैरी करेंगे और थ्रू आउट फाइनल तक। बाकी इंशाल्लाह हमारी टीम वेल बैलेंस्ड है और रिसेंटली मोहसिन ने लास्ट मैच में जिस तरह मोमेंटम गेन किया, मोमेंटम शिफ्ट हुआ हमारी बैटिंग में स्पेशली, तो यह है कि इसी मोमेंटम को कैरी करेंगे टिल फाइनल इंशाल्लाह। लेट्स सी व्हाट गोना हैपन। 54 for 6 जब आप गए थे विकेट पे खेलने के लिए और एक शानदार पारी आपने खेली, आज मतलब खेलने का वजह क्या है? नहीं, आज हम नए लड़कों को भी थोड़ा चांस देना चाह रहे थे और दूसरा थोड़ा सा मैं अनवेल फील कर रहा था तो मैं भी रेस्ट करना चाह रहा था तो उस वजह से नहीं खेले। लेकिन ये है कि नोमान माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेला है और जिस तरह का इसने आज 100 किए, 100 नहीं बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 150 किए, 146 नॉट आउट और बड़ा ही ज़बरदस्त खेला है, बड़ी अच्छी शॉट्स खेली हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह का टीम का मोमेंटम बना हुआ है तो हम इस दफ़ा ट्रॉफी उठाएंगे। आप ग्राउंड पे चक्कर लगा रहे थे, कैसा लग रहा था उनके छक्के चौके आज? बस मैं ग्राउंड के हर तरफ से इसके शॉट्स देखना चाह रहा था और इसने भी मुसलसल शॉट अच्छे खेले हैं, सो बड़ा अच्छा किया, बड़ा इंजॉय किया। आपका टीम जो है पहला टीम है इस ग्रुप में प्ले ऑफ में पहुंच गए, 3 स्ट्रेट विंस। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मोहसिन बता रहे कि हमारी टीम का स्पेशली कल्याण भाई लोग जो हमारे ऑनर्स हैं, श्रीनाथ भाई, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वेल बैलेंस टीम लड़के जो भी जहाँ से भी आए हैं तो उनको क्रेडिट जाता है और यस अल्हम्दुलिल्लाह डेफिनेटली जब आप जीत रहे होते हो तो एक मोमेंटम गेन कर लेते हो और ये ऑल अबाउट क्रिकेट। T20 तो हाई मोमेंटम पे है, चाहे बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 विन इन अ रो, तो इंशाल्लाह एक गेम रहता है ग्रुप का और होपफुली के टॉप पे फिनिश करें और अच्छे रन रेट से फिनिश करें। तो यह है कि आगे प्ले ऑफ है, हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है और लेट्स सी व्हाट गोना हैपन। कल आपने देखा जेपीसी ने पंजाब को हरा दिया था और अच्छा विक्ट्री था जेपीसी का। अब थोड़ा सा वो 3 टीम्स के बीच में अभी टग ऑफ वार चलेगा प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए। जी बिल्कुल, कल बड़ा अच्छा मैच हुआ है उनका और जेपीसी बड़ा अच्छा खेली है और हालांकि वो फर्स्ट गेम जिस तरह हमसे हारे थे हमें लग रहा था शायद वो अपने आप को टूर्नामेंट से आउट समझेंगे, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया, टूर्नामेंट की वन ऑफ द बिगेस्ट साइड को हराया। लेकिन स्टिल आई थिंक पंजाब लायंस की अगर साइड आप देखें तो उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो आगे क्वालिफाई कर सकते हैं और आई थिंक उनका रन रेट भी अच्छा है। लेट्स सी, उनका कल मैच है स्पार्टन्स के साथ, उसमें आई थिंक जो जीतेगा उनका आगे जाने के चांस ज़्यादा है। इस बार अली शेख आपके टीम में खेलना, एक बेहतरीन गेंदबाज है टीम में एंड इज़ लीडिंग वेल ऑल्सो। यस ही डूइंग वेल, यंगस्टर है, अंडर 19 खेला है और अच्छी बात है, हम दोनों से हेल्प भी करते हैं फील्ड में, तो अच्छा प्रॉस्पेक्ट है कि यंगस्टर को कप्तान बनाया और उस जिस तरह टीम को लेके चल रहा है, विच इज़ गुड फॉर अस। और नेक्स्ट मैच के लिए कुछ मेरे ख्याल से चेंजेस होंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, बिकॉज प्ले ऑफ में तो पहुंच ही चुके हैं आप लोग। नहीं, आई थिंक हम लोग ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग जो मोमेंटम हमने कैरी किया है इसको लेके जाएंगे प्लेऑफ्स में, ताकि हम लोग के पास आई थिंक प्लेऑफ्स में हमारे पास 2 चांस होंगे, लेकिन हम दूसरे चांस पे रिलाई नहीं करेंगे, हम पहले मैच जीत के फाइनल में डायरेक्ट जाने की कोशिश करेंगे। लास्ट एक सवाल आपसे, आज मिलिंद ने 190 बनाई 73 बॉल्स में, लास्ट ईयर भी सेंचुरी बनाई थी उन्होंने और सेंचुरीज बनते जा रहे हैं इस टूर्नामेंट में। मिलिंद इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, मैं उसके साथ खेला हुआ हूँ MLC के टूर्नामेंट्स में, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और उसका 100 बनाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन 190 इज़ आउटस्टैंडिंग। मैं जाके ज़रूर उस मैच की हाईलाइट्स ज़रूर देखूंगा, उसकी बैटिंग देखने में मज़ा आता है और जी बिल्कुल इस टूर्नामेंट में आई थिंक कोई 6 सेंचुरियाँ बन चुकी हैं, लेकिन जैसे जैसे मुकाबले क्लोज होते जा रहे हैं, आपने कल भी एक मुकाबला देखा है जो 170 में एक टीम ने डिफेंड कर लिया है, सो जैसे जैसे मुकाबले क्लोज होते जा रहे हैं और इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं और आपको प्ले ऑफ्स और फाइनल देखने का बहुत मज़ा आएगा। आप बताइए किस तरह से मुबारक देना चाहेंगे मिलिंद को? मिलिंद को ठीक है, ही प्लेड रियली वेल, आई हियर्ड अबाउट अ लॉट, इज़ गुड प्लेयर, MLC भी खेला है और माइनर लीग्स पर ही खेला है और उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और पर्सनली मैं इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन ओबियसली 190 विच इज़ नॉट अ
small deal, but he played really well. I really appreciate to him. और आपकी टीम में जो श्रीलंकन्स बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं इस Yes, even हमारी टीम में मिलन लहीरू मलिंदा और जैसे शिहान है, तो वो भी माइनर का टॉपर है। और ये कि ओबियसली अब आ रहे हैं, प्ले ऑफ्स आ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि टॉप ऑर्डर जितना हो सके चिप इन करे और बैट डीप। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि आगे क्रिकेट बहुत अच्छी और टफ़ कंपेटिटिव क्रिकेट होने वाली है, तो आपको भी मज़ा आएगा। तो होपफुली हम विन करें, टूर्नामेंट भी विन करें। हमारी टीम जिस तरह खेल रही है, मोमेंटम गेन किया हुआ है। बाकी क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। Thank you very much for your time and good luck for the next league match and also for the rest of the tournament. Thank you very much. Thank you.